जय मां शाला पिला माने मु सोमनाथ आपण माने स्वागत करचे सारदा फिजिक्स को तो पिला माने आ पूर्व क्लास रे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म रे जो क्लास तला हम फर्स्ट क्लास रे कोन देखले ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउ कोन देखले इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ तापर हम गॉस लॉ देखि देथिले गॉस लॉ रो दीटा फॉर्म देखि देथिले इंटीग्रल फॉर्म आउट होची हमर जो थिला डिफरेंशियल फॉर्म दीटा जाक ऑलरेडी मु देखि सारछि सो नेक्स्ट रे पिला माने आज हम करबो कोन ना गॉस लॉ रो जो एप्लीकेशन अछि तो मु तुमको कहि दो चाहिए पिला माने ए जो एप्लीकेशन गॉस लॉ रो अछि तमर तीनटा देछि गोटे होछि कोन ना स्फेरिकल सिमेट्री गोटे देछि कोन ना हमर सिलिंड्रिकल सिमेट्री देन देछि कोन पिला माने तमर प्लानर सिमेट्री ओके सो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लास रे ताको सॉल्व करबा सो आज रो क्लास रे हमें करबा कोन ना केवल स्फेरिकल सिमेट्री ओके सो ए क्लास रे हमें करबा कोन ना एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इन स्फेरिकल सिमेट्री ओके सो स्टार्ट करबा आज क्लास कौन रहिबो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इन स्फेरिकल सिमेट्री स्फेरिकल सिमेट्री अच्छा सो पिला माने ए जो स्फेरिकल सिमेट्री अछि ए थ्रू ही तमे ऑलरेडी जानि पथवा हम एटी कोन डिस्कस करबा ना स्फीयर डिस्कस करबा सो फास्ट आर टोटल दीटा पार्ट अछि सो फर्स्ट पार्ट रे हम कोनटा डिस्कस करबा ना फर्स्ट पार्ट रे हम डिस्कस करबा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड स्फीयर देन सेकंड पार्ट रे हम कोन डिस्कस करबा ना कंडक्टिंग स्फीयर और होलो स्फीयर ओके सो जोटा रहिछि हमर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सेटा एक्ट करे एज ए सॉलिड स्फीयर सो हेडिंग दमा कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर electric field due to a uniformly charged non-conducting sphere uniformly charged non-conducting sphere ओके सो पिला माने कोन लिखि छी हेडिंग ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अच्छा तो हमें कोन करबा मैं गोटे स्फीयर नबा अच्छा ये गोल जहां भी हो देखो चित्र मित्र मोर भलो हुए किंतु व्हाइट बोर्ड भलो होनी मु दी तीन थर ट्राई कर सारी आ ये 4 नंबर थर को वीडियो रिकॉर्ड होची ठीक अछि नेक्स्ट हम कोन करिया गोटे नेले नेला परे हमें कोन करबा देखो आर टोटल तीनटा केस अछि ओके सो तीनटा केस हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे रे नबा सो एठी तो हम ऑलरेडी चित्र करि नै छी कारण हमको तळे भी बहुत जिंस लिखे रे ऊपर भी लिखे रे तो हम आगे चित्र कर नै छी नेक्स्ट एठी लिखबा कोन ना consider a sphere of radius r and total charge q distributed uniformly throughout the surface consider a sphere of radius r radius capital R अब radius पिला माने कोन हम जानले ना capital R radius R and charge are distributed throughout the surface अच्छा सरफेस सहित सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हेथो ड्यू टू it's a solid it's a on charged charged non-conducting sphere here the charge
is also distributed throughout the volume. जेहेतु एटा गोटे होची कोन ना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ता भीतर भी बाहर सब आड़े चार्ज ता डिस्ट्रीब्यूटेड हे के रही थिबो एबे हम देखिबा कोन ना केस 1 कोन कहूची ना कैपिटल r इज लेस देन स्मॉल r कोन ना अच्छा लेट्स टेक ए पॉइंट p लेट्स टेक ए पॉइंट p which lies r distance from the center and make a Gaussian surface taking the r as radius. ओके r को रेडियस नै कि ना हमें कोन लिखबा कोन करबा ना गोटे गॉसियन सरफेस एटी देखो एटी मु लिखछि कोन ना स्मॉल r पिला माने स्मॉल r को नै कि हम गोटे गॉसियन सरफेस ड्रा करबा कहा चली बटे ना सॉलिड स्फीयर चली बटे ओके एटा इज गोना केस 1 ओके सो जे तमे गॉसियन सरफेस नेले तो हमें एठी कोन कर परिबा ने गॉसियन सरफेस रा हमें बाहर करबा देखो पूर्ण थरे नबा पूरा सेम जिंस गॉस लॉ जेमते हमें नै छे सेमती करबा केमती ना तार जो सरफेस अछि सेठो हम एक स्मॉलर डिस्टेंस नेले कोन ना ds यार डिस्टेंस हला कोन ना r एथले ds आउ e आउ ds भीतर एंगल होची 0 डिग्री the angle between the small square okay now consider a small surface ds on the Gaussian surface अच्छा पिले माने देखो एठी गॉसियन सरफेस ता का को लगी अछि माने केवल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ओके सो से पॉइंट नेक्स्ट आको हम लिख सरले देन ता पर पॉइंट कोन लिखा हबो ना द एंगल between ds vector and the electric field is given by कौन पिला माने 0 ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एंगल कहार ना ds वेक्टर रो होछि पिला माने कोन ना 0 अच्छा नेक्स्ट में कोन करबा ना जेहेतु हमें गॉसियन सरफेस नै छै तार हम कोन भाग करबा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाग करबा electric flux through the surface is given by flux
देखो एठी जो सरफेस रे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अछि ताके एठी जोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो हम ता विषय कथा होचे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस आगत हमें नबा से डीएस नहीं करा तापर ताको इंटीग्रेट करके बाहर करथले ही बाहर जाय था सो डायरेक्ट लिखिबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस is given by कौन पिला माने ना सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds अच्छा एबे हम लिखबा देखो आज जो सरफेस एरिया स्फीयर रो कोन ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हां सॉरी पाई 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर तो हम E ds को देखो आकि मु तो एमति लिख परि E डॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds देन आकु मु कोन लिख परबी ना E ऑफ 4 पाई r स्क्वायर अच्छा एटा हम पाइले कोन ना 4 पाई r स्क्वायर बाय द गॉस लॉ आप पुट करो डायरेक्ट बाय द गॉस लॉ यदि गॉस लॉ एप्लीकेशन कोन बाय द गॉस लॉ वी नो हमें कौन जाचे पिला माने ना सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट তাহলে E of dot of 4 pi r square equal to q by epsilon naught. That is E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square in vector form. In vector form, we can write E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. तब हमें डायरेक्शन देखना है क्या ओके सो ये आसेला पिले माने कोन ना केस 1 रो देन आपरे हमें कोन करबा ना केस 2 तापर करबा केस 3 तीनटा देबा अच्छा एटा हमें पहले केस 1 रो ना केस 2 टा हम कोन कहूची ना एट द सरफेस चलो ठीक है चलिबो ये बोले चलिबो case 2 where small r equal to capital R when the point lies on the surface when the point lies on the surface okay surface here small r equal to capital R then हम e कौन लिख परबा ना 1 by 4 pi epsilon naught क्या सॉरी कैपिटल R वगैरह और लिख रहे q अपन में कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r कैप वेक्टर फॉर्म लिख पारा न लिख पारा r कैप तो તમે लिख पारा बस स्किप कर पारा ओके सो ये थिला पिले माने कोन ना केस 2 देन एबे हम कोन करबा ना केस 3 केस 3 टा पिले माने तमान पे इंपोर्टेंट अछि सो देखो हमें केस 1 रे कोन नेले ना आउटर सरफेस माने सरफेस रो बाहर पॉइंट नेले केस 2 रे हम माने कोन गले ना ऑन द सरफेस नेले केस 3 रे हमें कोन करबा ना इन द सरफेस माने सरफेस भीतर रहबो धन्य पॉइंट P एटा हला ओरिजिन O एटा होची ds पॉइंट P और ds वेक्टर देन E वेक्टर भी ता सहित परपेंडिकुलर अछि एटा होची स्मॉल r केस 3 कोन कोची ना r इज स्मॉलर देन कैपिटल R एटा होची कैपिटल R एटा होची गॉसियन सरफेस
ओके सो पिला माने देखो एटा होची सेंटर ओ स्मॉल r टा होची r रेडियस कहार ना गॉसियन सरफेस जेतु पॉइंट p टा बड़ सरफेस रो माने बड़ स्फीयर रो भीतर रहउची when the point lies inside the sphere when the point lies inside the sphere inside sphere हेले पिला माने हम कोन करू ना टोटल चार्ज एनक्लोज देखो ये जो छोटा स्फीयर टा रहला देखो ये तो टोटल चार्ज q एनक्लोज करूची ऑलरेडी माने एटा जेहेतु एटा सॉलिड स्फीयर पिला माने ये ऑलरेडी ये जो बड़ स्फीयर टा अछि एटा जे केस 3 रो जो पिला माने ये जो बड़ स्फीयर टा अछि ये ऑलरेडी माने चार्ज q माने ये करूची किंतु एनक्लोज करूची किंतु ये जो स्मॉल q जोटा कि तयारी हला q डैश जोटा कि तयारी हला माने ये जो स्मॉल स्फीयर टा कोन पई ना जेहेतु हमें पॉइंट नेक ना तार गॉसियन सरफेस बाहर कले ये जो गॉसियन सरफेस टा सी भी पिला माने कोन कंसिस्ट करूची ना q डैश कंसिस्ट करूची जोटा होचे आ ओटे माने आउ किछ चार्ज कंसिस्ट करूची ये अलग चार्ज कंसिस्ट करूची सो फॉर द गॉसियन माने जो द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द q बाय द गॉसियन सरफेस कोन कहूची ना अच्छा the total charge enclosed by the Gaussian surface is given by that is q dash इक्वल टू जेतो एटा भीतर तो एटा कोन एटा थोड़ी ना सरफेस पाई होची की माने देखो से जो गॉसियन सरफेस थिला सेटा सरफेस ऊपर थिला किंतु एटा कोन छी ना वॉल्यूम रे अछि तो एटी पिला हम कोन करबा ना वॉल्यूम इंटीग्रल हम नबा सो वॉल्यूम इंटीग्रल देखो नॉर्मल तो चार्ज डेंसिटी हम नो चार्ज डेंसिटी होची माने चार्ज डेंसिटी इज charge per unit volume or unit volume the most of the cases right so charge per unit volume okay so या पे हमें लिख परिबा कोन q dash इक्वल टू कोन पिला माने ना देखो रो आ पे भी जहां आ पे भी सेया से तो अलग जिंस ताको तो छाड़ दियो रो आ पे जहां आ पे भी अलग जो सेम जिंस रो किंतु हमें को लिख परिबा कोन या पे जो रो टा अछि सेटा कोन थवा ना रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम माने 4/3 पाई rq जोटा कि वॉल्यूम रो सूत्र कहार ना ये जो स्मॉल स्फीयर सेमते रो कहा पाई ना बड़टा पाई भी सेटा भी कोन ना 4/3 पाई किंतु एटा कैपिटल rq बुझ पालो ए बड़ स्फीयर पाई रो होची कोन ना 4/3 पाई rq माने कैपिटल rq आ स्थान स्फीयर पाई रो होची कोन ना 4/3 पाई rq सो एटा में q डैश कहां बाहर करछे ना गॉसियन सरफेस को सरफेस ना जार स्मॉल r जोटा होची छोटो हला सो q डैश आको हम कोन लिख परिबा ना रो 4/3 पाई r q हमें ऑलरेडी अच्छा सो we already have the charge it like charge density or rho represent charge density we already have charge density of the sphere having radius capital R is given by এটা তো লিখি মনে পিলা মানে ओके सो गिवन बाय अच्छा मोर मोर आंसर देखौची ये हो जदी मोर छोट ठाकुर माने विश्वास कर माने माने जेतले मोर पाठ पढा होय ना माने फिजिक्स माने एमती मुंड ऊपर दे जाउथिबो तापर सब माने एमती प्रॉब्लम सब हो नथिबो तापर कोड लॉन्ग क्वेश्चन पाउ नथि ये मोर टेबल ऊपर सब बळे एमती मुंडियाडे बके दी सब
माने तुमको इलॉजिकल लगे थे पारे किंतु बाकी ये कथा तो सुनंती यार कथा सुनंती हाँ माने राति पाइले ताको मुंह देखिबो राति रे सोया पूर्व भी ताको मुंह ही देखिबो ओके we already have charge density for the capital R is given by which is rho equal to q of अच्छा हाँ ठीक है q divided by 4 by 3 pi capital R cube then हम कौन होगा पुट कर अच्छा आपको दे दो इक्वेशन नंबर 1 आपको दे दो इक्वेशन नंबर 2 पुट इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 put equation number 2 on question number 1 we get हम कौन पाएगा q dash equal to 4 by 3 pi small r cube into q by 4 by 3 pi capital R cube पटियाला होइला कोन ना q dash equal to q into small r cube अपन में capital R अच्छा ये सरेला the flux by the Gaussian surface हम कौन पाएगा ना flux by the Gaussian surface अच्छा मोड़ी बैंड हो जो मुझे 5 सेकंड दिया अच्छा सो से कौन खोजी ना फ्लक्स बाय द गॉसियन सरफेस ए जो गॉसियन सरफेस का फ्लक्स हम केमति बाहर कइबा इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल e डॉट এটা তো d आइला फ्लक्स हां टोटल फ्लक्स बाय द गॉसियन ओके सो 5 सेकंड प्लान ओके सो ठीक अछि e डॉट ds ओके सो यहां पर एटा कोन दिबो ना e ऑफ ds तो टोटल भीतर ही छै तार एटा ही आसीबो कोन सेटा नबा ना 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर जे तो रेडियस अछि पिला माने कोन ना r ओके सो हमें जानि छै कोठो ना गॉस लॉ वी नो फ्रॉम द गॉस लॉ we know from Gauss law हमें कौन जानचे ना जो हमारा एटा होची कोन सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू q डैश अपन में एप्सिलॉन नॉट कारण ये जो चार्ज का जो एनक्लोज करছে সেটা হচ্ছে কোন না q ড্যাশ और ये जो चार्ज का एनक्लोज करছে সেটা হচ্ছে কোন না q ओके सो हमको কিন্তু इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करना আছে इनसाइड कहां होल स्फीयर नो sphere S okay we know from the Gauss law कोन ना सरफेस इंटीग्रल ऑफ q डैश by epsilon naught so हमें पुट करबा r वैल्यू सेटा होच कोन e of 4 pi r square equal to q डैश जगह q डैश वैल्यू पकाओ माने q r cube अपन में कैपिटल r cube r square कैंसिल आउट हो गेला एठी छोड़े एप्सिलॉन नॉट e आइसला कोन ना 1 by 4 pi epsilon naught into q the r divided by capital R cube electric field of अच्छा electric field by the surface by the sphere S okay सो ये हैला पिला माने कोन ना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ जोटा अछि कोन ना यार मैं तो भूलिए होछि काहे कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ एडा होछि कोन पिला माने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ एडा होछि सॉलिड स्फीयर ओके सो या पर हमें नेक्स्ट देखिबा कोन ना कंडक्टिंग स्फीयर आ जोटा होछि कोन ना होलो स्फीयर
ओके सो 5 सेकंड पिला माने ओके हम कोन करथले लिखुथले घरे रहले काम दाम तो जहां देले पड़ियो यार मना करी बैठे तो 5 सेकंड सॉरी गाइस सॉरी एमती तो घर रहले कोन करिया जहां बेले ठीक काम दाम मझे पड़िबो जीवा पड़िबो नेक्स्ट आउ के दिन तो जय जगन्नाथ हो जाଉଛି माने सीरियसली मु 15 मिनिट हेलानी मो मार्कर खोजुतली आउ मो मार्कर मोर पॉकेट रे ही थिला किंतु मु घरटा को उठेई पकेई सारी ले ओके सो आमे बे जिबा कोठी की ना सेकंड नंबर जोडा कोजी कोन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर electric field due to an isolated uniformly charged conducting sphere अच्छा सो पिला माने यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कोन पाई बिहेव करे एज ए होलो स्फीयर कारण कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज इनसाइड होची 0 ए प्रॉब्लम होनी निकलो हेली मो जीव आकार लोभ माया धरी केते प्रकार आसाने नासाने ओके मैं एटा कहले कि ना कोच ओके फाइनली बहुत कष्ट परे हमरो स्फीयर ड्रा हे जाई छी जहार रेडियस होची कोन ना कैपिटल आर सो हम लिखबा कोन ना consider an sphere or of radius capital R due to its isolated conducting sphere charged conducting sphere hence its inner charge or charge here it's hence the charge inside the charge अरे बाप रे the charge inside the sphere पढ़ दिए consider a sphere of radius r due to its isolated charged conducting sphere hence the charge inside is zero okay so ready ठीक अछि हम करबा कोन ना केस 1 नाम पे कोन ना कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R तार मध्ये कोन ना हम पॉइंट नौ छ P जोटे कि होची आउटसाइड द स्फीयर जोटा होची पिला माने कोन ना आउटसाइड द स्फीयर स्मॉल ओके सेम हम नवा कोन ds नवा ds नवा और इलेक्ट्रिक फील्ड पे सेम डायरेक्शन में रहबे देन ds नेक ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करबा सो फर्स्ट मोड लिखि दोची वी हैव द चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी कोन पिला माने ना रो इक्वल टू रो कोन ना q अपन में 4 पाई
capital R square. So we have charge density of sphere of the sphere S. Okay, S. ଏବେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫ୍ଲକ୍ସ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫ୍ଲକ୍ସ through the Gaussian surface. The electric flux through the Gaussian surface 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 is given by कौन पिला बने ना surface integral of E dot ds equal to E of 4 pi r square. Then according to Gauss law we have अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्मॉल r कौन पे कारण एटा गॉसियन सरफेस राइट्स तो सभी भाजियो ए सेवडा थाओ तो लिखने में एटा जात्रा करन समान एटा इजी अछि अच्छा हां हम कहि दउ छी सुनो जो गॉस लॉ अछि गॉस लॉ रो देखो जदी माने धन्य नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पड़ला के अलग किछि पड़ला ताल तुमको लिखिया पड़ो गॉस लॉ रो दीटा फॉर्म लिखिया पड़ो माने इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म दीटा फॉर्म लिखि किना तमे ए जो कंडक्टिंग स्फीयर लिखो कि जो प्लानर सिमेट्री मु पढेबे प्लेन शीट हो के आउ से जहां भी पड़ता तो से गोटा लेखा पड़िबो से थ्रू तक सब लिखिया पड़ो किंतु आ पूर्वटा जोटा मु करेली फास्टटा सेटा को करिए कहले तुम केवल सेही माने केवल गॉस लॉ ही केवल इंटीग्रल फॉर्म ता ही लिखिबो ओके सो हम करथिले देन by putting the Gauss by the we know from the Gauss law we know from the Gauss law we know from the Gauss law अरे कौन जाते पिला माने ना E of 4 pi r square equal to q upon epsilon naught. Then E equal to कौन ना 1 हाँ ठीक है एक ही था सो 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square in vector form we can write E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q upon r square r cube. Okay, so ये सरियला हमरा केस 1 देन एबे हम करियो कोन देखो मुझे लिखि नहीं था लिखि कोन डायरेक्ट लिखि दूची केस 2 r equal to capital R at the point on the surface at the point when the point lies on the surface अच्छा कौन होगा ना सतह होगा E equal to 1 by 4 pi epsilon naught 0 epsilon naught q अपन में कैपिटल R स्क्वायर सरियला देन एबे गोटे कोन काम ना केस 3 अच्छा केस 3 रे कि जोडा बड्ड कामते करिया नै कारण जेहेतु q इनसाइड 0 देन केस 3 केतळे ना जेतळे कैपिटल R is less than capital R when the point lies inside the sphere the charge inside
the sphere is 0. So the electric field এটা পিলাମାନେ শর্ট কোশ্চেন আস পারে so the electric field inside the sphere is 0. ओके ये तो टोटल सहीला ए जो सेकंड केस पिलाମାନେ पढेली कोन ना कंडक्टिंग स्फीयर जो पढेली तार गोटे ग्राफ अछि ओके सो ता ग्राफ ता मु एट करी तुमको देखौछि जय मासला जा हो फरे करे मु गोटे करि पाछि बडो ये मोबाइल ओके अच्छा सो ग्राफ तो सबुर करके देखेबा कथा जदि मु ब्रीफ रे तुमको पढे को चाहिबी ग्राफ सबु करके देखेबाटा ठीक किंतु सबुर तो करके देखे होनी एक्सपेरिमेंटली देखो पिला माने आमे जेता फास्ट बाहर कलु कहार ना आउटसाइड द स्फीयर सेटा कोन आसला ना E इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught 0 q upon में small r square then E1 वाला E2 कोन आसला ना 1/4 pi epsilon naught 0 q upon में capital R square then E3 कोन आसला ओके इतना से कैपिटल है कैपिटल है हां E3 कोन आसी 0 आसी এটা হচ্ছে E র প্যারামিটার এটা হচ্ছে R র প্যারামিটার এটা হচ্ছে স্মল ক্যাপিটাল এইটি হচ্ছে ক্যাপিটাল R পিক এইটি হচ্ছে ক্যাপিটাল R পিক ওকে the graph shows the variation of E with R this graph shows the variation এটা হচ্ছে গ্রাফ পেলাম না ग्राफ वेरिएशन जेतो एटा गुटिका शॉर्ट क्वेश्चन माने 6 मार्क पड़तला सेते ग्राफ उडा थिला तो मे भी पढि जे पारे किछि बड़ कथा नुवा दाग पे इक्वल टू 0 या भीतर इक्वल टू 0 माने इनसाइड हो 0 एठी भी बड़ मात्रा पे एठी बड़ ओके सरफेस ऊपर पिक करबो वेरिएशन द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ E with R so ये थिला पिला माने कोन ना स्फेरिकल सिमेट्री रो ये थिला स्फेरिकल सिमेट्री रो गॉस लॉ नेक्स्ट पिला माने हमें आ नेक्स्ट क्लास में हम कोन करबा ना ओके तो आर नेक्स्ट क्लास रे पिला माने हमें करबा सिलिंड्रिकल सिमेट्री जोटी कि इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर टाइप रो सेटा तो कंडक्टर गोटे आ गोटे अछि सो ताको हमें करबा आर नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट तापर हमें मूव करबा कोठी ना प्लानर सिमेट्री को ए तीनटा सरियले गॉस लॉ सरजिवो ओके सो देखो तमे पढिथिबो प्लस 2 टाइम रे पढिथिबो ये सब भी करांती बोधे डिटेल रे करांती किबा गोटे गोटे करांती सो देखो किंतु एथर तो ये सब अछि सो आको डिटेलली करो किबा केतल किछि भी पढिजो ठीक ठिकाना नै बाकी तमे थरे जदी बुझी गलो तो आराम से आको करिया किछि बड़ महारथी भी नुहा ओके रहली जय जगन्नाथ जय मां शारदा।